Point 2, that is register transfer language. Okay, in the previous section we learn about registers. Registers are simply group of flip-flop which can store certain number of bits. Okay, suppose we want to form an 8-bit register, it will require 8 flip-flops, as one flip-flop can store 1 bit of data. Okay, so अब हम पढ़ेंगे few definitions पहले in the topic register transfer language. The first definition is micro operations. Okay, what is micro operation? It is simply the operation performed on data stored in register is called micro operations. Suppose we are having few register A, register B, register C. Okay, and the register is having certain data, and if we will perform any operation that means any arithmetic operation, any logical operation, or any shifting operation on the data which is stored in register, then that all the operations are called micro operations. Suppose we are performing addition of content of two register, so that is called micro operation. Okay, suppose we are performing ending or ORing or XORing of the content stored in two register, that XORing is also called a micro operations kind of. Okay, next is register transfer. Register transfer is, it implies the availability of hardware logic circuit that can perform micro operation and can transfer result to the same or another register. Means we are having register, we are having a certain content in that register. Okay, we are performing any arithmetical, logical, or any shifting operation on that content of a register, then that is called micro operation. Now once we are performing any arithmetic operation, say for example, suppose we are performing addition of a content of two registers. Now we are having result of that addition. We can store that result either in one of the register, means suppose A और B दो रजिस्टर को हम ऐड कर रहे हैं, अब उनका एडिशन का जो रिजल्ट है वो हम A में स्टोर कर सकते हैं या B में स्टोर कर सकते हैं, या तो फिर दोनों को छोड़ के किसी तीसरे रजिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए फिर उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे हमें वही दोनों में से सेम रजिस्टर में या तो कोई तीसरे रजिस्टर में हमें जो रिजल्ट कॉपी करना है, मूव करना है, तो ये सब करने के लिए जो भी हार्डवेयर सर्किट रहेगी, दैट सर्किट को हम कहेंगे रजिस्टर ट्रांसफर सर्किट. ओके, उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज. दिस इज रियली वेरी यूजफुल एज द नेम सजेस्ट लैंग्वेज. ओके, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज इज सिंपली इट इज सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस ऑफ माइक्रो ऑपरेशन अमंग द रजिस्टर इन सिम्बॉलिक फॉर्म. मीन्स जितने भी माइक्रो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, फिर माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमें किस रजिस्टर में स्टोर करना है, ये सब दिखाने के लिए, सब डिनोट करने के लिए हम एक सिम्बॉलिक लैंग्वेज यूज़ करेंगे, एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज. ओके, सो हाउ व्हाट आर द सिम्बॉल्स वी कैन यूज ओके टू शो द माइक्रो ऑपरेशन एंड देन movement of the result, and that forms a symbolic language, and that language is called register transfer language. Okay, so what are the symbol being included in this language are the first one is general purpose register are denoted such as R1, R2 and R3. Okay, then system register means a special purpose register like a program counter which can be denoted using PC abbreviation, then memory address register, then instruction register, and so on. Here I am showing the table. Okay, that how the symbols are being used. Letters and numerals we can use for showing register. Suppose MAR, it is showing register. R2, it is showing general purpose register. Okay, then parenthesis denotes a part of register. Suppose we are having a 16-bit register, but we want to use only half of the register, only 8-bit, lower order 8-bit registers. So we can denote that part using this R2 and the 0 to 7-bit, only half of the bit from 16-bit. Or we can denote like this R2 and L, the lower part of bit, lower order bit of the register. Okay, then arrow denotes the transfer of information. Suppose we are writing R2 and R1, it means content of R1 register will be copied or moved to the R2. And then comma is used to separate two micro operations. Suppose we are having one micro operation and then comma, then second micro operation, so this comma separates two operations. मीन्स एक के साथ मल्टीपल माइक्रो ऑपरेशन हमें दिखाना है तो हम बीच में कॉमा यूज़ करेंगे. ओके, इसका मतलब ये हुआ, सपोज ये एग्जांपल है हमारे पास कि T इक्वल टू R1 एरो R2 कोमा R2 एरो R1. इसका मतलब हुआ कि दो माइक्रो ऑपरेशन है विच इज सेपरेट बाय दिस कॉमा, एंड मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट, इट डिनोट्स एन ऑपरेशन दैट एक्सचेंजेस कंटेंट ऑफ टू रजिस्टर ड्यूरिंग वन कॉमन क्लॉक पल्स एट T इक्वल टू 1. जब ये T को क्लॉक पल्स 1 मिलेगा तब क्या होगा, R2 के कंटेंट R1 में जाएंगे और R1 के कंटेंट R2 में जाएंगे. मीन्स व्हेन T इक्वल टू 1 दिस टू रजिस्टर विल स्वैप इट्स कंटेंट. ओके,
So in this way we can show the